Actually, my journey started in 12th. Out of boredom, went viral, sitting at home doing literally nothing. Then one day I thought, okay, as a nature, obviously there's toxicity, you can't be creative and bring out of the box ideas. 13 interviews में से straight I got rejected. सपोज आप अभी अभी अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो एंड आप अपने फ्यूचर के लिए कंप्लीटली क्लूलेस हो। आप अपने लाइफ में करना तो बहुत चीजें चाहते हो, पर आप जो भी चीजें करते हो ना, आपको बस दो ही आउटपुट निकल के मिलता है। पहला है फेलियर, दूसरा है रिजेक्शन। तो ऐसे ही कुछ जर्नी रही है आज के हमारे की गेस्ट की, जो कि है कशिश यादव। सी इज फ्रॉम वडोदरा, गुजरात एंड सी इज एन एजेंसी ओनर। सो अगर आप उनकी जर्नी के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो ना, तो आपको ये पॉडकास्ट कंप्लीटली देखना पड़ेगा। सो वेलकम कशिश यादव ऑन द यूथहुड अनप्लग्ड। एंजॉय योरसेल्फ। Hey Kashish, how are you doing? Hi, Vanshu, I'm good. How are you? I'm also doing absolutely fine. First of all, welcome on the podcast and thanks for being here. I'm extremely grateful to be here and thank you so much for having. Thank you for that. So, क्या अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो हमारे ऑडियंस के लिए? Absolutely. So I'm Kashish and I run a marketing agency called On Fleek Marketing. Okay. So, that's good. So, how you come to this agency? मतलब, what's your journey? Okay, so actually my journey started in 12th. Out of boredom in 12th vacation, I started off one haze and I started exploring Instagram marketing by then. Okay. धीरे I went into college and then I started exploring filmmaking. So usme I made a short film. It took around 6 months to complete the whole scripting part, shooting part and everything. Uske baad mein it kind of went viral. It got around 3 million views on the internet. Okay, that's great. Thank you. Then after I thought maybe filmmaking is where I should be. So I thought of going there, but like any other graduate, I wasn't sure कि graduation के बाद मैं क्या करूँ. Like Which course are you pursuing during graduation? yeah, it was BBA. Okay. So, continue. Yep. So BBA के बाद में it wasn't like I wanted to use something in filmmaking, but I wasn't sure that I was a little afraid. Firstly because where I stay in Baroda, Gujarat, उस time पे इतनी opportunities नहीं थी filmmaking के लिए. So that was also one big thing, and I didn't want to really move out or something. So after graduation, I was like, for some months, I was doing nothing. I was just uh, sitting at home doing literally nothing. Then one day I thought, okay, ऐसा तो नहीं चलेगा काम. We need to get out. Let's see, like what all opportunities are there. So I went out and applied for creative writing in some of the agencies and production houses. So उसमें से I got around like 8 jobs, and now I started the work, but I couldn't sustain because of the environment. Like for me, it was like I can't sit at one place and think about creative ideas. So then Okay. that and the environment was really toxic. I couldn't like it. Like obviously there's toxicity. You can't be creative and bring Of out course. of the box ideas. So yep. Then I got to know that I'm not made for jobs. Then I thought of doing certain internships in digital marketing. तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटिंग ट्राई किया. दैन ग्राफिक डिजाइनिंग की भी मैंने 1-2 इंटर्नशिप्स की, कोर्स किया सब कुछ. सो आई एक्सप्लोर्ड एसईओ एज वेल. ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक्सप्लोर कर लिया. एंड देन आई थॉट ऑफ कि चलो कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग इज माई थिंग. देन कुछ 1-2 इंटर्नशिप्स करने के बाद में, 1-2 कोर्सेस करने के बाद में, आई गॉट टू नो लाइक आई थॉट ऑफ जंपिंग इनटू एंड like getting an internship in content writing specifically. Okay. But I couldn't really get like मैंने काफ़ी इंटरव्यूज दिए थे उस वक्त. आई थिंक
13 interviews. Yep, 13 interviews में से straight I got rejected. So Okay, that's very a kind of down phase, and मतलब काफी hard to handle it. totally, like I was so confused during that time. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब एक भी crack नहीं हो रहा है. Intern, I was so like कि ओके जॉब नहीं, internship भी दे दो, कुछ भी दे दो, I'll work for free. But I wasn't getting even that like such internship, unfair internship. So I was like कि क्या गलत हो रहा है. I wasn't sure. So during that time, I was just into writing. Like I wasn't aware of my skills and all. So there was just one. I was left with one internship offer, which was into social media marketing. So I thought like that was the last thing on my mind. Of course, I totally forgot about that phase कि social media marketing मैंने किया हुआ है and I can you know like work in that field as well. But मेरे पास कोई opportunity बची नहीं थी, तो I took that opportunity and I started with that internship. उसके बाद में it went really well, pretty well, like जैसा expect किया था उससे काफ़ी ज़्यादा different था. Of course, I was doing freelancing and all. उसके पहले in social media marketing, but never thought कि maybe ये job भी हो सकती है इसमें, या फिर it can be a full-time career. So then 6 months के लिए वो internship चली. And उसके बाद में वो freelancing में convert हुई. इसके अलावा I met 2 of my colleagues there, the same at tech company. वहाँ से we all three thought of starting an agency. And we started off काफ़ी सब कुछ explore, मतलब काफ़ी कुछ हम लोग explore कर रहे थे साथ में. Like we were niching down, we were working on the like services, we were outreaching clients offline, and we were making the website. सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें like social media खुद का build कर रहे थे. Everything was done by all three of us. Then 8 साल तक I stayed there, but then I thought, like I started getting that feeling that okay, I'm not able to express myself properly. People. So मेरे जो ideas थे वो कहीं ना कहीं out of respect as well, because both of them were like elder there and all. So I thought of like quitting and starting something of my own. So तब मुझे पता चला that partnership isn't for me. So yeah, At least you have that entrepreneurial wala mindset. absolutely, you can say. Okay, So that's good. That's perfectly fine. but that is like harming as well, because of course like you can handle a good team, you can be a good leader, but maybe partners ke saath I couldn't work at that time. I don't know Okay. what was the issue in my mindset, or maybe it wasn't meant to be. But anyway, then वहाँ से हट के फिर कुछ months के लिए I started freelancing, and then I started with marketing. So In fig marketing. yeah, that is my current agency. And वो start करने के बाद में I stayed, like it's been 2.5 years now, and it is working fine. So 1 year तक तो I took it as a test कि okay, let's see if we get sustain or how it goes and all that. But there are some of my 4 to 5 clients जो अभी तक रहे हैं मेरे साथ like from the start. So that's good. It's all because of them. That I am still in the market. So they have been my motivation throughout my journey till now. Okay. So एक चीज़ मुझे आपकी जर्नी से जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है वो ये है कि मतलब काफ़ी सारे रिजेक्शंस के बाद भी, काफ़ी सारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को क्रॉस करने के बाद भी मतलब आप रुके नहीं, आप एक्सप्लोर करते रहे. सो दैट्स द थिंग एवरीवन शुड डू इन देयर लाइफ. सो दैट्स परफेक्ट. सो जैसे कि आपने बताया कि आपकी एक मार्केटिंग एजेंसी है जो कि ऑन फ्लिक एजेंसी, तो क्या क्या कोर सर्विसेज है जो आप इसके थ्रू प्रोवाइड करते हो? Okay, services में हम जैसे मेरा core Instagram marketing है. 8 years से I am into Instagram marketing and general Okay. social media marketing में like marketing overall branding के अंदर and everything मैं 5 साल से. जी. So हमारी जो core services हैं, it is Instagram marketing, branding and LinkedIn personal branding. Okay.
तो जैसा कि आपने लिंक्डइन कहा, तो हम सभी जानते हैं कि लिंक्डइन एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक में मतलब काफ़ी सारी मिक्स्ड ऑडियंस है, बट लिंक्डइन में काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ऑडियंस हमें देखने को मिलती है। तो आपके इस जर्नी में लिंक्डइन ने कैसे हेल्प किया आपके इस जर्नी में? थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगी? ओके, सो लिंक्डइन की मेरी जर्नी बहुत लंबी नहीं है, इट्स जस्ट अ 4 months राइट नाउ, but I have achieved like great results. कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स मिले मुझे। जो जो ऑडियंस है वहाँ की वो काफ़ी प्रोफेशनल है, जैसा आपने बोला, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। you don't have that fear कि okay maybe backlash होगा. Of course you have that fear starting में कि show up करना पड़ेगा इतने प्रोफेशनल लोगों के सामने एंड ऑल, बट इवेंचुअली वो फियर मेरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं चला गया. ऑफ कोर्स आई डिड अ लिटिल माइंडसेट वर्क एंड एवरीथिंग उसके पहले, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग विद पर्सनल ब्रांडिंग. सो once I got started, there was no looking back. Like I started enjoying. I started with just one motive. Ki I just want to explore what's there on LinkedIn, how it is done, and how it is working and everything. So कहीं ना कहीं शुरू किया तब धीरे धीरे करके I started enjoying the whole process of content creation, लोगों के साथ engage होना, networking calls, everything. So I was like, okay, it's going great. Like this is a good platform. It's not इतना fearful वाला जो मुझे कहीं ना कहीं था. Then I started getting inbound leads as well, and which I was not expecting कहीं से भी. So some of my posts went viral. उसकी वजह से मुझे inbound leads भी आई. Then I really got to know about कि LinkedIn का कितना potential है और वो कितना help कर सकता है आपको आपकी journey. So till now it's been a commendable like journey, and I'm really happy to be there and really happy to provide value. And audience, मेरी audience जितनी है, it's more of like a community to me, and I'm really happy. It's been a great journey, to be honest. ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जिन ऑडियंस को वो नहीं पता है कि इनबाउंड लीड्स क्या होती है, तो बेसिकली लीड्स दो टाइप की होती है। एक होती है आउटबाउंड लीड्स, एक होती है इनबाउंड लीड्स। आउटबाउंड लीड्स बेसिकली वो लीड्स होते हैं जिनको आप सामने से अप्रोच करते हो, बट अगर इनकेस आपको लीड सामने से अप्रोच कर रही है आपके सर्विसेज के लिए या फिर आपके प्रोडक्ट के लिए, तो उन्हें हम इनबाउंड लीड्स कहते हैं। सो दैट्स इट। सो तो मैम, अगर सपोज देयर इज अ बिगनर हु इज कमिंग ऑन लिंक्डइन, सो हाउ ही कैन अर्न हिज फर्स्ट फ्यू बक्स through LinkedIn, like suppose whatever services he or she is providing, so उस particular service को लेकर के वो clients कैसे find out कर सकते हैं LinkedIn के through? Okay, so I get this question a lot in my DMs as well. But you need to first work on your own profile. Like आप अपनी profile को just एक posting वाला machine मत देखो कि कुछ बनाया, post कर दिया, done. And फिर आप clients को message कर रहे हो या whatever, like you're searching for outreach method. I think many of the people confuses consistency with daily posting. They think if they post daily, that is the consistency, but I think that's completely wrong. Absolutely. It's like something Yes. consistency is different. I can post 3 times. It's basically posting when you feel like it shouldn't be just for the sake of doing it. Of course, आप 2 बार post करो, भले 1 बार post करो weekly, but it should be of value and आप खुश होनी चाहिए. Like it should make you happy. So And that's when the audience can connect also. absolutely, like you need to start exploring and you're starting out. आपकी audience इस तरीके की बन रही है, धीरे धीरे करके, like जो audience आपकी maybe 1 महीने पहले थी, वो आपकी 1 महीने बाद नहीं रहेगी if you're getting a lot of new followers. तो कहीं पहले like keep exploring new topics. आपको कुछ नया ऐड करना, आपको लग रहा है कि ओके मेरे पास ज़्यादा freelancers आ रहे हैं, तो try creating something on freelancing. Founders आ रहे हैं, तो फिर उनके हिसाब से आप content बनाना शुरू कीजिए. Okay. Yep. And it's not about like definitely like आप अपना profile build कीजिए पहले and present that profile as a portfolio to your clients, not like directly something or like हमें like clients and all.
first have a portfolio. I'm not saying कि आप beta clients या फिर of course you can do that. आप beta clients भी ले सकते हैं लोगों को approach करके. Actually, I also don't know what's beta client. Sorry. What's beta client? You mentioned a word that beta client. I personally don't know this. Okay, so Can you please explain? beta clients are basically जिनके लिए आप बिना any charge के free में you are working and एक testimonial या फिर एक feedback के लिए आप उनके साथ work कर रहे हो अपने services में कुछ improvement लाने के लिए. Okay. Based on it. Understood. Continue. Go on. Yeah. So first of all, like see your own profile as a portfolio. उसको आप अच्छे से build करो, उस पे engagement लेके आओ, know your audience first. अपना एक अच्छा strong personal brand बनाने के बाद में you can start reaching out. That's good. So I think this is a really good way to find clients through LinkedIn. So is there any advice that you want to give a beginner on LinkedIn who is coming now on LinkedIn? Absolutely. So I have realized one thing that in the in the race of making our posts viral या फिर अच्छे followers बड़े बड़े numbers में followers होने के चक्कर में कहीं ना कहीं people start losing interest. Like आप consistent इसलिए नहीं रह पाते because you are not enjoying the whole process. You need to post something या फिर आप अपनी audience से engage करो, उन्हीं लोगों के साथ engage करो. जो भी करो, don't forget yourself in the process. Like, you need to make yourself happy. You should be excited for posting whatever you have created. You should be excited to get on a call with someone जिसके साथ में आप बात कर रहे हैं और same like client के लिए भी you should be excited to like convert them. So it should कहीं ना कहीं like look for that excitement, not just कि LinkedIn पे क्या work कर रहा है, कौन से topics viral हो रहे हैं, वो सब पे it's all secondary. Primary is like your own happiness. And I think that's it. That's the main ingredient. Okay. So I think the audience has got a lot of value from this podcast. So thanks for giving your valuable time. And in case अगर आपको कशिश जी से कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में इनसे पूछ सकते हो और इनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. आप वहाँ से इन्हें फॉलो या फिर इनके साथ कनेक्ट हो सकते हो. एंड थैंक्स कशिश फॉर गिविंग योर पर्सनल टाइम एंड फॉर बीइंग हियर फॉर दिस पॉडकास्ट. Thank That you so really much. means a lot to me. Thank you, Ivan, for having me. And I'm really looking forward to other episodes of the podcast. I think they are gonna be like purely inspirational. And let's see किस exciting personalities को आप अपने podcast पे invite करते हैं. So thank you so much for having me. I will also stay dedicated to this, which I've started this podcasting journey for sure. Absolutely. तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कशिश जी की जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी और आपको इनकी जर्नी से बहुत सारी लर्निंग्स भी मिली होंगी. आपकी ऐसे टॉप 3 लर्निंग्स जो आपको सबसे पसंद आई कशिश जी की जर्नी से आप अपनी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना. एंड आपके अगर कोई भी डाउट्स है इस पॉडकास्ट से रिलेटेड तो आप काइंडली उन्हें भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड अगर आपको ऐसे ही और भी ज़्यादा अमेजिंग लोगों की जर्नी जाननी है और भी अमेजिंग लोगों से सीखना है तो आप यूथहुड को सब्सक्राइब कर सकते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.